before straight away jumping to the quotes UPSC has been asking towards actually attempting to solve them, let's actually go through as to why UPSC brought this quote, or why generally quotes are asked. Okay, because now you know in our first lecture we have discussed about as to why this paper was brought in 2013 and why it is required, because this is not just an academic topic like a history or geography. It is something more than that. Most of the questions are coming as if they want to know what you personally would have done, or rather I would go to the extent of saying that it is almost like your interview on paper. So it is very wide. So in the same way, the kind of wideness, the kind of fluidness GS paper 4 has as compared to the whole exam, quotes has as compared to the whole paper. That's the analogy. So quote is very wide, very fluid, very difficult to categorize in syllabus points and all. So it's better you trace it differently. So why quotes? See, I would like you to actually read this quote. Okay, this is a Plato's quote. Until philosophers are kings, or the kings have spirit of philosophy, cities will never rest from their evils. Okay, क्या मतलब है? जब तक philosophers kings नहीं है होते, या फिर kings को spirit of philosophy नहीं आती, cities मतलब society will never have rest from evil. जो खराब चीजें हैं, evil है, बैड चीजें हैं जिंदगी में या सोसाइटी में, दे विल नॉट रेस्ट, दे विल नॉट गो अवे. ओके, अभी यहाँ पे मतलब क्या है? विल ट्राई टू गो वन बाय वन. I'll let you know why I'm bringing this quote here. This is beyond the part of our syllabus. This is not the quote UPSC has asked. Okay, I am taking the help of this quote to actually make you understand as to why quotes are important for UPSC to ask you for a would-be officer. Now, until philosophers are king. What is the meaning of philosophers here? Philosophers means somebody who has critical thinking, okay, and appreciation for deeper meaning. Appreciation for deeper meanings, deeper meanings in life and things like that. A philosopher is the person who takes that particular thing and keeps thinking about it from its start to end. Why, how, what is the logic, what is the purpose, why are we here, and all those kind of questions. So generally the questions related to life and purpose and things like that, philosophers are generally expected to be in that arena. Okay, here kings means those who are, or I would say people at the position of power. Okay, this is the meaning, the broad meaning of this quote, this word here. So until philosophers are kings, or people who have a deeper appreciation for deeper meaning and critical thinking are the ones who are at the position of power, or kings, that is people at the position of power, have the spirit of philosophy. Spirit of philosophy मतलब जैसे spirit of service होता है, spirit of philosophy means the attitude towards things is philosophical, broad, okay, and wide enough. The framework of the mind is also very wide. The horizons of mind is also very wide. So spirit of philosophy होना मतलब obviously critical thinking होना, appreciation for deeper meaning होना, and जो पर्सपेक्टिव है स्पेशली जिंदगी की तरफ कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग, एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एग्जामिनिंग एवरीथिंग. सो दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफी. नाउ सिटीज विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम द एविल्स मींस तब तक मतलब दुनिया में से बैड, खराबी, गलत, अशुभ वो खत्म नहीं होगा. मतलब एविल, क्राइम, बिगेटरी, अनएथिकल बिहेवियर्स, killing someone, things like that. So मुद्दा क्या है कि जब तक philosophers kings नहीं बनते
या फिर किंग्स जो है ऑलरेडी उनको स्पिरिट ऑफ फिलोसफी नहीं आती, जिंदगी अच्छे दिन नहीं आने वाले। पॉइंट इज जब तक ये नहीं होगा अच्छे दिन नहीं आने वाले। नाउ दिस इज प्लेटोस कोट, ओके। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट्स अनदर स्टोरी। सो आपको एक चीज समझ में आ गई। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर कोट हियर under the banner why quotes is because the overall quote is trying to say that this critical thinking ability or appreciation for deeper meaning in life is very important for the people in the power to have, so that society will benefit. Okay, this is exactly what UPSC also wants. Aap would be officers will be people in the position of power, yes, and if they have deeper meaning, appreciation for deeper meaning, they have critical thinking ability, they have spirit of philosophy, inquiry and broader purpose and things like that, if the would be officer has this understanding, the deeper understanding, society को वो benefit करेगा। because आप देखिए ना, generally अगर कोई thinker है, सच वाला thinker, I'm not saying celebrity thinker, genuine thinker who thinks life from a very broad perspective, आप एक सिंपल खुद को सवाल पूछिए, फिलोसॉफिकल सवाल है, वी आर डीलिंग कोट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, सो लेट्स गेट इनटू दिस। सम पीपल एक्चुअली हैव एलर्जी विद द वर्ड फिलोसॉफी एंड द थिंग्स लाइक दैट, ऑल बुलशिट ऐसे बोलते भी हैं, बट लेट्स कम बैक टू इट। यूपीएससी वांट्स अस टू एक्चुअली सिट एंड लिसन एंड सी, ऑब्जर्व एज टू व्हाई फिलोसॉफी। अगर इतना यूजलेस होता तो फिलोसॉफी करके इतना 2500 साल से चीजें चलती नहीं। अरिस्टोटल हो, बुद्धा हो, महावीर हो, ये शंकराचार्य, everybody is talking about life, from where we have come, why have we come, because when you have deeper understanding of philosophy, you realize your own humbleness, you clearly see that I am actually nothing, and when you see I am also actually nothing, you actually tend to become more ethical. Obviously if you know that I am just another person, you treat others also according to you, the way you will treat yourself, you will treat others also in the same way. So obviously you will become more ethical. It is all proven kind of thing. All the great philosophers of the world have been the most ethical people. So that is the context here. So now he says, sorry, UPSC, we are trying to understand as to why UPSC asks. So UPSC is asking quotes so that to develop in you this, or if it is already there, nurture it. एप्रिसिएशन फॉर डीपर मीनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या आपके पास है, वो देखना है यूपीएससी को, और नहीं है तो उसमें आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा। तो दे वांट यू टू एक्चुअली हैव दैट, सो दैट व्हेन यू विल बी इन पावर, यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी अ एथिकल पर्सन, यू विल बी अ पर्सन विद इंक्लूसिव विजन, यूनिवर्सल विजन और ब्रॉडर विजन सोसाइटी का। ठीक, सो नाउ दिस इज अ ब्रॉड थिंग एज टू व्हाई quotes are brought in the paper. ठीक, और उसके क्या क्या है, मतलब सेम पॉइंट्स, योर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यस वी कवर्ड दिस, मेकिंग पीपल एट द पावर पोजिशन मोर एथिकल, यस दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ब्रॉडर व्यू ऑफ लाइफ, यस, rather than having narrower view of life, it's actually a broader view of life. Now appreciation for the deeper meanings in life, हम क्यों हैं, क्या है, कैसे हैं, because if you have philosophical question actually bothering you all the time, you are very unlikely to be doing any unethical thing. Now reflective about your own action. Now what is reflective about your own action is examining yourself, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं सही कैसे कर सकता हूँ। So if you remain in that contemplative mode, obviously you will do cautious things that will not harm others and things like that. So it is always, हम बोलते हैं ना कि सोच समझ के जो करता है समझदार होता है, और समझदार पीपल पावर के पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली द सेम लॉजिक। देन रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी इज ऑल अबाउट अप्लाइंग लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी इज अबाउट डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स रादर देन योर ओन प्रेजुडिसेस। सो बहुत जरूरी होता है क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी होना फॉर क्रिटिकल थिंकिंग टू एक्चुअली सस्टेन। ओके, थॉटफुल एक्शंस जिसको बोलते हैं ना हम, सोच समझ के करना। सो ये सब चीजें एक फिलोसोफर में होती है, या एक थिंकिंग डीप थिंकिंग प्रोसेस पर्सन में होती है, somebody who has an appreciation for deeper meaning वैसे वाले में होती है, spirit of philosophy वाले में होती है, and that is the reason they have brought in this quote here, जो एक कॉम्प्लेक्स एक मैसेज होता है, लेकिन वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
ऐसे बुन के रखा होता है एंड यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू decode it. If you if you have the skill to decode it, to understand it, means you have the ability to understand what the broader and complex and more philosophical things in life, which will actually help administration. So philosophy helps, or officers becoming more philosophical certainly helps administration to make more ethical. That's the basic logic, and that is the reason they have brought in court. I am sure you will never get this understanding from this perspective कि यूपीएससी ने ये लाया क्यों है, because generally what happens is when you see the question paper, court is also like there was some question I have to answer. That is there, that is a part and process, like part and parcel of the process of answer writing. But why? If you know why, okay, this is what the quote of Bhagat Singh said, if you know why, you no need to worry how. आपको अगर पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे करना is not an issue, वो हो जाता है. That's how the logic here also is. Okay, so this is the basis on which we will start our preparation, or rather our attempting different courts that all the courts rather that UPSC has been UPSC have asked from 2013 to 19. ठीक है, so should we jump to the questions that UPSC has asked? Okay, now when now this is the broader understanding, the basic framework understanding, or a foundation as to go ahead with perceiving court as something special. Now this is, let's now go back to, or let's come to the point of proper paper as to what was the question saying. So generally when court comes, what happens is they have 2 or 3 courts of which there is a one title question for all, like wording. So वो wording भी बहुत जरूरी है. That is also very important to understand कि what actually they want from you. Okay, sorry. So wording of the actual question. Now these are the 4 different kinds of wording UPSC have till now asked. Given below are 3 quotations of great moral thinkers or philosophers. For each of these quotations, bring out, the most important thing is here, bring out what it means to you. Very important aspect, you need to understand this thing, what it means to you. So when they are asking what it means to you, means your answer should not look like copy paste. They are not asking some theory, they are asking what it means to you. So I am sure you need to read things, read theories, but so that you formulate your own answer, जिसमें कहीं ना कहीं आपका एक, अगर if there is a connotation of the question is like that, आपका खुद का एक उसमें एग्जाम्पल हो, अपने रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो, आपका एक पर्सपेक्टिव हो, आपका वर्डिंग हो, सिंपल लैंग्वेज में हो. वेरी इंपॉर्टेंट इन कोट्स. डोंट जस्ट ट्रीट देम एज अ क्वेश्चन जिसका आंसर किसी किताब में होगा. आंसर किताब में नहीं होगा, कुछ थॉट किताब में होगा जो आपको इंटरनलाइज करना है, एंड देन यू विल आंसर. एंड ऑब्वियसली इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट यू हैव टू आंसर. प्रेजेंट कंटेक्स्ट मतलब व्हाई दिस प्रेजेंट कंटेक्स्ट थिंग्स इज बीइंग यूज्ड इज, वो कोट आता है कभी कभी प्लेटो ने बोला था. सो दे आर नॉट आस्किंग यू टू गो बैक टू व्हाट प्लेटो सेड इन हिज टाइम्स एंड व्हाट इट मींट देयर. नो, अभी के कंटेक्स्ट में बताओ इसका मीनिंग क्या है, वो भी आपके हिसाब से. ठीक है, आपके हिसाब से अभी के कंटेक्स्ट में मीनिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है, अनइम्पॉर्टेंट भी है. प्रेजेंट कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप प्लेटो ने तब बोला तब नहीं चाहिए. यू रिमेन नाउ, थिंक नाउ हाउ इट मीन्स टू यू इन अ प्रेजेंट कंटेक्स्ट. ठीक है, जैसे अभी पिछला कोट हमने देखा, फिलोसोफर्स आर किंग्स. नाउ व्हेन ही एक्चुअली रोट दिस कोट और मेंशन दिस कोट, philosopher means actual philosophers, kings means kings. But now in present context, philosophers means whom? Thinking person, person with a lot of inquisitiveness, broader view of life, deeper meaning of life, like that person आज की डेट में. And kings means whom? Anybody who is at the position of power. Now कोई एक person is not deciding everything, so you have positions of power at different levels. So everyone should have that philosophical aptitude. That's what the point is. That's what it is present context. ठीक. Now similar another wording they have asked.
given are the two quotations of moral thinkers or philosopher. For each of these, bring out what it means to you in a present context. Same similar है, but ये दूसरे ईयर पूछा था, so हमने सोचा उसमें अलग कुछ wording होगा. What does this quotation means to you in a present context? Ultimately, you understood two things are important: you and present context. You and present context. What do each of the following quotes mean to you? Obviously ये भी present context में होगा. क्यों? Because quote जब पूछा था तो शायद वो 6th century में पूछा था, 16th century में बोला होगा. अभी आपको उसका क्या मतलब है? And because that is the only way you can actually show your philosophical or analytical, critical or deeper perspective towards things. And जब भी ये quote की बात होती है, quote जो है उस समय जो बोला गया वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बोला जाता है. लेकिन कोट चीज ऐसी होती है जो उसका बोलते हैं, उसका रिलेवेंस जो है ना वो इटरनल रहता है. अगर बुद्धा ने बोला है एज यू थिंक सो यू आर, वो अभी भी लागू है, अभी भी इंप्लीमेंटेबल है, अभी भी रिलेवेंट है. तो क्योंकि कोट का मतलब ही होता है कि वो एकदम एक्सट्रैक्टेड चीज होती है जो आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए सिर्फ नहीं अप्लाई कर सकते. सो दैट इज द रीजन दे आर आस्किंग दिस कोट एंड दे आर आस्किंग यू टू गो थ्रू अटेम्प्ट देम. ठीक. सो शुड वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट कोट? ओके. नाउ दिस इज वेरी फेमस कोट एंड स्पेशली फेमस अमॉन्ग एस्पिरेंट्स in essay, and I think there was one essay also on this point long back. Then in GS paper, interview, things like that, this particular quote is generally used by students. So everybody knows this quote, but this was asked once. Okay, so let's go to the quote. Now our point, our way of dealing quote will be two prongs. One, we will understand the deeper meaning or meaning what it is actually trying to say, what Mahatma Gandhi tried to say, and then we'll come back to how to write answer for that. Two things. Okay. Now quote says, there is enough on this earth for everyone's need, but for no one's greed. जरूरत का सबके लिए है, लालच के लिए नहीं है, एक्स्ट्रावेगेंस के लिए नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है, जरूरत के लिए है. नाउ आप इस पूरे को जो भी कोट है उसका क्या मतलब निकला? इफ यू कैन थिंक फॉर सम, पॉज करके आप अगर सोच पाए तो सोचना. तो देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ मीन्स हमारे जो रिसोर्सेस है, ही इज टॉकिंग अबाउट, जनरली अर्थ मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेस बेसिकली. ओके, नेचुरल और अदरवाइज, बट रिसोर्सेस, पानी, खाना, चीजें. सो गांधी सेज दैट whatever, like we are the 7.5 billion, 7.6 billion people now. सबकी नीड के लिए तो एक्चुअली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत आती है ग्रीड की, लालच की, एक्सप्लॉयटेशन की. सो द कोट ट्राइज टू से, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द कोट? See, generally quote is always directed towards something, either describing something or prescribing something. हमेशा याद रखना, quote will describe you something or prescribe you something. Some message कि ये करो, ये नहीं करो, और describe मतलब कोई चीज को एकदम से एक दो सेंटेंस में एकदम अच्छे से पिरो के बोल दिया, so that all the aspects of it is touched upon and then issue is very clear to you. So this particular quote क्या बोलता है? ये quote ये बात करता है जो गांधी जी का अदरवाइज भी था, सिंपल लिविंग की. ठीक, सिंपल लिविंग की बात करता है. देन उसका होता है हम्बलनेस की बात करता है. ठीक. देन ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. It talks about environmental ethics also, environmental ethics.